Assalamu alaikum students. This is Yasser Ali, your mathematics teacher, and today we are going to start lecture number 3. In the previous lecture we had solved the exercise 10a, problem number 1 and 2. In this lecture we have to solve question number 3 only. So the question number 3 is find the area and the perimeter of a shaded region. So before solve this question, we have little bit some idea about these two formulas. So the first one is the area of semicircle. When we have to find the area of a semicircle, we use this formula. The formula is 1 upon 2 pi into r square, where r is a radius, and the formula for the perimeter of a semicircle is 1 upon 2 pi into d, where d is a diameter of a circle. Semicircle means half of a circle. For example, this is a circle, and if we cut it into two pieces, equal parts, or in other words, we draw a straight line. The straight line is a diameter which cross the center of a circle. So there is a two parts of a circle. First one is this and second one is this. So these two parts are said to be a semicircle or half of a circle. So the question is, find the area and the perimeter of the shaded region in each of the following figures that are the arcs are either quadrants or semicircles. Quadrant means fourth part of a circle, and semicircle means two parts of a circle. So the part 1 is, this is part A. This is part A of the question number 3. In this question we have to solve for the area and the perimeter for the shaded region. So first we have to solve the area, after that we have to find the perimeter of the shaded region. So the figure is this. This is given figure, and in this figure there is a another semicircle which is inside the big semicircle. So there is a 3 semicircle. The first one is, this is first one, and this is second one, and this semicircle is third one. So there are 2 semicircles, and we have to find only the area of the shaded region and the perimeter of the shaded region, and this is the shaded region. Shaded region. We have to only find the area of this part, shaded region. So moving to the solution of this question. In this question, the radius of semicircle, first semicircle, it means big semicircle, is 14 centimeter, and the radius of R2 means the radius of the second semicircle is 7 centimeter, and the radius of third semicircle is also 7 centimeter, because the diameter of a big semicircle is 28 centimeter, so the radius will be 14 centimeter. Also the diameter of a second semicircle is 14 centimeter, then the radius will be 7 centimeter. Again the diameter of a third semicircle is 14 centimeter, so the radius will be 7 centimeter for this semicircle. So the diameter is 28 centimeter. D1 shows the diameter of first
semicircle, and D2 shows the diameter of the second semicircle, and D3 shows the diameter of the third semicircle. Similarly, R1 shows the radius of the first semicircle, and R2 shows the radius of the second semicircle, and R3 shows the radius of the third semicircle. So the first one, we have to start the area of the shaded region. We have to only find the area of a shaded region. So यहाँ पर मैं थोड़ा अपनी उर्दू में समझाता चलूँ. ये हमारे पास एक फिगर है. अब इस फिगर में 3 सेमी सर्कल्स है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन. हमें जस्ट फाइंड करना होगा शेडेड जो एरिया है, इसका शेडेड पार्ट है, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. और ये शेडेड पार्ट का एरिया हम तब फाइंड कर सकेंगे है जब ये जो फर्स्ट वन है, क्योंकि फर्स्ट वन सेमी सर्कल है, ये सबसे बड़ा है, बिग सेमी सर्कल है. तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे बिग सेमी सर्कल का, उसके बाद सेकंड सेमी सर्कल का, उसके बाद थर्ड सेमी सर्कल का. फिर हम सेकंड और थर्ड का जो एरिया आएगा वो हम फर्स्ट वन से माइनस करेंगे, तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा. तो उस वजह से मैंने एक यहाँ पे फार्मूला बनाया हुआ है. द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन is equal to the area of the first semicircle minus area of the second semicircle and the area of a third semicircle. तो यहाँ पे हम जस्ट एरिया का फार्मूला यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. So the area of a shaded region will be, the formula of area is 1 upon 2 pi into R1 square, where R is the radius of the first semicircle. Similarly, minus the formula for the area of the second semicircle, 1 upon 2 pi into R2 square. Again, the area of the third semicircle is 1 upon 2 pi into R3 square, where R1, R2 and R3 are mentioned in the top of the problem. These are the R1, R2 and R3. So now we have to just put these all values in this formula. Then it will be, so now the formula will be 1 upon 2 bracket start, and the value of pi is 22 upon 7, and the value of R1 is 14 square, minus again 1 upon 2 into the value of pi is 22 upon 7 into, and the value of R2 is 7 square, minus again 1 upon 2 into 22 upon 7 multiplied by 7 square, where 7 is the radius of the third semicircle. So these, if we solve in this step or simplify this step, we will get our the result. So it will be 43, 2 divide by 14 minus 1078 divide by 14 minus 1078 divide by 14. So the LCM is 14, then it will be 4312 minus 1078 minus 1078, then it will be 2156 divide by 14. Whenever we divide 14 by 2156, then it will be 152 centimeter. So this is our answer for this problem.
So the area of the shaded region is 152 centimeter square. Now the second part for this problem is perimeter of a shaded region. Again we are going to our figure. In this figure we have to find perimeter. So perimeter is a circumference. तो जहाँ पे मैंने circumference समझाया था वही circumference को हम सेकंड नेम होता है perimeter. तो यहाँ पे जो perimeter है shaded region का वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. वो है हमारे पास ये, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइन शो हो रही है क्योंकि ये शेडेड एरिया है. अब इस पूरी ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है, जो लेंथ है, इसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस भी कहते हैं और इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं. अब पेरीमीटर हमें इसकी फाइंड करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला यूज़ होगा सर्कमफेरेंस का, लेकिन सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वन है हमारा सेमी सर्किल उसकी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड सेमी सर्किल का. जब तीनों का हमें पेरीमीटर मिल जाएगा तो हम उसको डायरेक्टली तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ए शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा. सो लेट्स मूव. सो द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन is equal to the area of the first semicircle minus area of the second semicircle minus area of the third semicircle. So the formula for the this is the area of a shaded region, but we have solved already it. We have solved this time perimeter of a shaded region. So the perimeter of a shaded region is, this is perimeter, is equal to the perimeter of the first semicircle plus perimeter of a second semicircle and perimeter of the third semicircle. So perimeter means a circumference of a circle. Then the circumference of a circle is equal to the pi d r 2 pi r. It means these two formulas are to finding the circumference of a circle, whole circle. Whenever we find the circumference of a semi, then it will be pi d divided by 2, because we have to find the perimeter of a semicircle, not a whole circle. Then we have to divide 2 by pi d, and then it will be 1 upon 2 pi d. This is the perimeter of a first semicircle, for second, and this is for third, where d1, d2, d3 shows the diameter of the first, second and third semicircle respectively. So the 1 upon 2, the value of pi is 22 upon 7 and d1 is 28. So d1 is 28. So moving to our figure, this is d1 28, d2 is 14 and d3 is again 14. So for here again we put the value of pi 22 upon 7, and this is the value of d2, this is the value of pi, and this is the value of d3. Now whenever we multiply 22 with 28 and divide by 14, because 2 into 7 is equal to the 14, it will be 616 divided by 14 plus again we have to multiply 22 with 14, it will be 308 and 2 sevens are 14 plus 22 multiplied by 14, again 308 and 2 sevens are 14. Now the LCM is 14, then 116 plus 308 plus 308, then it will be
1232 divided by 14 is equal to the 88 centimeter. So the perimeter of the shaded region is 88 centimeter. This is our answer. So the second part, it means the part B for the question number 4. The question number 3 is, so this is our second problem. In this problem also we have to find the perimeter and the area of the shaded region. So this is a circle, this is a square, this is a square, and the formula for the area of a square is side into side, then it will be side square. And there is a 4 quadrants. The first one is first quadrant, this is second quadrant, and we named it third quadrant, and this final one is fourth quadrant. So this is the shaded region, and we have only find the area and perimeter of this region. So first of all we have find the area of shaded region. Again we have again we have to solve for the area of the square, and minus area of the first quadrant minus area of the second quadrant and area of the third quadrant, and finally the area of a fourth quadrant. मतलब कि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे. उसके बाद यहाँ पर जो ये 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, यहाँ पे इन 4 क्वाड्रेंट्स का भी एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा. फिर जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वहाँ से हम 4 क्वाड्रेंट्स की एरिया माइनस करेंगे, तो हमें ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है साइड स्क्वायर. तो जहाँ यहाँ पे साइड की जो वैल्यू है वो है 14 सेंटीमीटर, ये साइड की वैल्यू है. तो मीन ये डायमीटर भी हम इसको कह सकते हैं. तो डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर या फिर साइड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. So area of a shaded region, the side of a square is 40 centimeter. The radius of each quadrant is 7. तो यहाँ पे हर क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 7 है, क्योंकि जब डायामीटर 14 होगा तो रेडियस उसका हमेशा हाफ होगा, जो हाफ यहाँ पर बनेगा 7. तो ये डायामीटर 14, रेडियस 7, और हर क्वाड्रेंट का सेम ही रेडियस होगा. तो फार्मूला हमारे पास बनेगा, ओवरऑल एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ए सेकंड क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए थर्ड क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ ए फोर्थ क्वाड्रेंट. सो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, उसका फार्मूला होगा साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला होगा जिस तरीके से हमने सेमी सर्कल का फार्मूला बनाया था, क्योंकि जो फार्मूला होता है एरिया का वो होता है पाए और स्क्वायर. और जब हम सेमी सर्कल के लिए ये फार्मूला चेंज करेंगे तो सेमी मीन्स 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे. अगर क्वाड्रेंट के लिए हम बनाएंगे तो ये पाए और स्क्वायर डिवाइड करेंगे 4 के साथ, या फिर 1/4 इंटू पाए और स्क्वायर. तो ये फार्मूला बन जाएगा. तो यहाँ पर भी मैंने 4 से डिवाइड किया है. 4 से इस वजह से डिवाइड किया है क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, इस वजह से. सेमी सर्कल के लिए 2 थे, 2 पार्ट्स थे, तो 2 से डिवाइड कर रहे थे. तो फर्स्ट वन के लिए अलग होगा, सेकंड वन के लिए भी अलग, थर्ड वन के लिए भी अलग, और फोर्थ वन के लिए भी अलग होगा. और यहाँ पर रेडियस एक ही है सबके लिए, तो आर मैंने सेम ही रखा है सबके लिए. तो आर की वैल्यू है हमारे पास 7. तो साइड की वैल्यू भी थी हमारे पास 14, तो साइड की वजह से की जगह पर मैंने 14 पुट किया. एंड यहाँ पे देखें हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट थे. तो इसको सेपरेटली सॉल्व करने से बेहतर है हम इसको
4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक पार्ट के साथ, या फिर चारों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4 1/2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई this portion, this part, so it will be 1078 divided by 28 and multiply by 4, then it will be 14 are 196 minus multiply by 4 with 1078 and divide by 28, then it will be 4328. Now multiply this part from 198, we get 42 centimeter square. So this is the area for the shaded region. Now we have to find the perimeter of a shaded region. अगेन पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर से फिगर पर जाते हैं कि पेरीमीटर क्या है. तो यहाँ पे पेरीमीटर जो शेडेड रीजन का बन रहा है वो बनेगा जस्ट ये बनेगा सिर्फ रेड कलर में जो शो हो रहा है, दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए शेडेड रीजन. तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए भी यूज़ करेंगे फार्मूला, इसके लिए भी यूज़ करेंगे, इसके लिए भी यूज़ करेंगे, इसके लिए भी यूज़ करेंगे. तो जब इनका यूज़ करके फार्मूला यूज़ करके 4 बार फिर सब सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, या फिर एक ही बार एक की वैल्यू फाइंड करके फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सबकी लेंथ एक जैसी है और सबकी वैल्यू भी रेडियस वगैरह सब कुछ एक ही है. तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे आप देखें कि फार्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए शेडेड रीजन इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस द पेरीमीटर ऑफ ए सेकंड क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द पेरीमीटर ऑफ ए फोर्थ क्वाड्रेंट. We can write it 4 multiplied by the perimeter of a each quadrant. So it will be, this is 4 and 1/2, this is pi and this is diameter, this is the diameter, and the value of diameter is 14 and the value of pi is 22/7 and this is 1/4 same. Now multiply 22 with 14 and divide by 7 into 4, then it will be 308 divided by 28. Now multiply by 4 with this whole bracket, then it will be 4 multiply by 11 and 4 11s are 44 centimeter. So our result is 44 centimeter. So if you have any queries about this lecture and this lectures or this exercise, you may contact with me on my email. So my email is aliyasir.685@gmail.com. Okay student, I hope you are understanding my lecture and you are getting my all the key points, lecture points. So inshallah we will meet on the next lecture. So take care, Allah Hafiz.